So we are at VIT भोपाल यूनिवर्सिटी, जहां देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने. So come with me and let's find out कि ये न्यू एज इंडिया की सबसे पावरफुल एजुकेशनल डेस्टिनेशन कैसे बनी. VIT भोपाल, भविष्य की ओर एक कदम. एक ऐसे भारत में जो हर दिन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, जहां सपनों को मेहनत और शिक्षा से नई पहचान मिलती है. वहीं एक ऐसा संस्थान है जो युवाओं के भविष्य को नई दिशा देता है. यहाँ सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि सोच को विकसित किया जाता है, नए विचारों को आगे बढ़ाया जाता है और छात्रों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार किया जाता है. ये है VIT भोपाल यूनिवर्सिटी. किसी भी संस्थान की असली पहचान उसकी इमारतों या सुविधाओं से नहीं, बल्कि वहाँ के छात्रों से बनती है. VIT भोपाल यूनिवर्सिटी में छात्रों को सिर्फ दूर से देखा नहीं जाता, बल्कि उनके हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया जाता है, उन्हें सहयोग दिया जाता है और उनके सपनों को आगे बढ़ाने में पूरा साथ दिया जाता है. A student's success is not only in academics; it encompasses the emotional, personal, and the social development. The Students' Welfare Office is at the heart of students' life at VIT Bhopal University. Yeah. And from the academic guidance and emotional well-being to cultural engagement and personal development, Student Welfare Office focuses that every student gets the same attention and every student feels comfortable in the campus and he or she brings a positive vibes in the campus. With the help of 24/7 helpline support in the campus. Wow. And student counselor present in the campus, more than 100 clubs, active clubs. My God. Which comprises the technical, non-technical, celebratory, student chapters. Student can hone their skills as per their choice. They have freedom to choose any club. शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती. असली शिक्षा वो माहौल बनाने में है जहां स्टूडेंट्स खुद को सुरक्षित, समर्थ और आत्मविश्वास से भरा महसूस करें, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को सच कर सकें. Here we have different buildings for boys and girls, and we have students from all over states. Wow. So like हर जगह से बच्चे हैं और they are very like enjoying here. उनके लिए medical facilities हैं, nutritious food है, and every recreation block है हमारे यहाँ, बच्चे जहाँ पे enjoy करते हैं, gym है, all these facilities are also available. So we are like trying to give at best so that students can just enjoy their journey here, and while they are leaving the hostel they can like feel कि हाँ हमने एक अच्छा समय निकाला हॉस्टल में and we enjoyed here. जिंदगी की बड़ी सीख सिर्फ कक्षा के अंदर नहीं मिलती, बल्कि साथ रहने, जिम्मेदारियां निभाने, खुद फैसले लेने और लोगों के साथ जुड़ने के अनुभव से आती है. VIT भोपाल यूनिवर्सिटी में कैंपस जीवन को इसी सोच के साथ तैयार किया गया है, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ साथ जीवन के हर पहलू में सीख सकें और आगे बढ़ सकें. किसी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होती. उसकी भूमिका उन सभी व्यवस्थाओं तक जाती है जो छात्रों को बेहतर तरीके से सीखने, आगे बढ़ने और अपने जीवन में सफल होने के लिए सही माहौल और सहयोग प्रदान करती है. यहाँ जो बनाया गया है वो सिर्फ एक कैंपस नहीं है, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण है जो छात्रों को स्पष्ट दिशा, आत्मविश्वास और बेहतर विकास के लिए हर जरूरी सहयोग प्रदान करता है. In VIT Bhopal, we allow the students to choose their credits, their course, their class timings, and even professors. So in this manner, he is able to frame out a timetable which is actually reflects their interest, goals, and learning style. So he is very convenient to follow the timetable which he himself is framing out. The learning pedagogy what we follow is CALTEC. CALTEC stands for Collaborative Active Learning Through Technology. Yeah. Actually that connects the classroom theory
with the real life problem solving. And that enables the students to learn, involve, innovate, and hence the growth is confident. It contains confidence in the students. And whenever he is coming out with the degree, he is having a practical skills, which is nowadays a gap between the industrial requirement and the education. इन क्लासरूम्स के भीतर पढ़ाई सिर्फ सुनने और याद रखने तक सीमित नहीं है। यहाँ छात्रों को सवाल पूछने, नए विचारों को समझने, आपस में जोड़ने और अपनी सोच को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सीखने की असली गहराई तब आती है जब ज्ञान को व्यवहार में उतारा जाता है। यहाँ सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें अभ्यास के माध्यम से समझा, परखा और अधिक मजबूत बनाया जाता है। ये खोज और सीखने की स्वतंत्रता हर विषय में दिखाई जाती है, जहाँ छात्रों को अपनी रुचि और लक्ष्यों के अनुसार अपनी शैक्षणिक यात्रा को आकार देने का अवसर मिलता है, ताकि वो अपने भविष्य के लिए सही दिशा चुन सकें। See, in VIT Business School, we are actually trying to make our students ready to match with the real business world, because you know that without this emerging technologies, no one can match with this what this business world is wanting. So we have courses like BBA, BB Honors with Research, and MBA. So in these courses, apart from traditional teaching, we try to make our students ready for the real business world. Like we provide them summer internship capstone projects, we have real industry projects, and then apart from the traditional teaching, we teach them the courses like AI, artificial intelligence in business. We have IoT, Internet of Things, we have business analytics, and these are the courses which will be making our students ready to become the future leaders. So these are the key features of our students to make comparable to this BTech students. हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय हो या इंजीनियरिंग, VIT भोपाल यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को वास्तविक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार करती है, जहां उन्हें न केवल तकनीकी कौशल मिलता है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। So architecture is always about its context. Like today where we are, who we are designing for, and where were we before, and what was before us. So from heritage to modern, this is a process of architectural practice which has evolved through ages. So here the students learn about the basics of architecture, the human-centric designs, the computational simulations, the AR/VR technology, and nowadays it is the artificial intelligence in architecture. All right. So they can properly prepare a design of a building, and then that can be made. So if we talk about these pieces, so can you just tell us that? These are the historical monuments. So we teach them history, then we teach them the technologies, like how the load is transferred, how sound travels, how wind travels in a home or in a building, and how spaces are made functional. We say that the spaces are the one which have a function, and once you are designing that function, then you become an architect. So we teach them that this space will be used by humans or some any other species, and that space has to be functional. It cannot be dysfunctional. So here at VIT Bhopal, we are fortunate enough to have a fully flexible credit system, which has enabled our students to learn across the architecture. That is, they can have engineering, computer science, artificial intelligence, even robotics. Nowadays, smart homes and smart cities are coming up. So my students are now having robotics and artificial intelligence in the UG course, that is the 5-year BR course, where they can see the computational effects in the real time on the building, outside the building, on the humans and surroundings using AI. And then practical applications, obviously, that how finally the building after completion will sustain for more than 100 years. Yeah, so we can see a VR also kept there. So that is, it's going to give a representation of the buildings through AI, and that would be giving students a very clear picture that how does it actually look. So the unique point which School of Architecture VIT Bhopal is practicing is the balance of vernacular wisdom. That is what our history has given us from the past. That is the treasure we are bringing, and the modern applications to virtual innovations. And
the pedagogy, that is the V2 VRA pedagogy, what I say is vernacular to virtual reality based adaptive architecture. This makes the student enable to have a human centric design, because mostly the humans are using, then computer applications on it, then heritage conservation, how the heritage has to be conserved, how the culture has to be preserved, how modern requirements are to be addressed, because the times are changing after COVID. Now compact spaces are more required. So how the user is having different expectations, and how an architect has to preserve the culture of this nation, Considering the new demands. adapt the new technologies, adapt AI also, but preserve what architectural concept is, that is to preserve our heritage. Then climate responsive architecture, because we have 4 types of seasons and different geographical locations in India. डिजाइन संभावनाओं को आकार देता है, उन्हें एक कल्पना से वास्तविकता की ओर ले जाता है, और इंजीनियरिंग उन संभावनाओं को रूप, मजबूती और स्थायित्व प्रदान करती है, जिससे वो लंबे समय तक उपयोगी और प्रभावी बन सके। फ्यूचर की इंजीनियरिंग सिर्फ थ्योरी से पॉसिबल नहीं होती है। इनोवेशन तब होता है जब स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मिलती है एंड दे एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स। सो टू फाइंड दैट आउट, लेट्स एंटर रियल लैबोरेटरी। At School of Electrical and Electronics, VIT Bhopal University, the students are going to learn the undergraduate programs and master programs in VLSI and PhD programs, where the students are going to work on industry-oriented projects and industry-oriented learning, blended learning. We offer the programs with industry-oriented curriculum. And hands-on experience will be available in this laboratory, robotics and AI laboratory. The students are going to work on hands-on projects. So as I can see that there's so many projects and it looks quite fascinating, but the one project which caught my attention was the dustbin. Sir, is it a dustbin or what should I call it? Yeah, actually it is not a normal dustbin. It is a sensor-based dustbin, which is, you can say, the smart dustbin, which is going to give the separation of the dust, that wet and dry dust, as well as if the dustbin is full, it is not going to open the lid, and all that sensor mechanism has been happened here, and it is completely developed by the students. कितना टाइम लगा ये डस्टबिन, ये स्मार्ट डस्टबिन को बनाने में? So the students will take around 1 month they took, and they learn the basics of the sensors and how to blend with the corresponding hardware, motors and all they have designed. Yeah. So in the last question would be that, you know, we can see AI taking over and, you know, we're learning robotics as well. Robot भी आ रहे हैं. And कहीं ना कहीं, do you think in the near future AI और जो robots हैं वो take over कर लेंगे, you know, human power को? क्या खतरा है? What is your take on the future of AI and robotics? Yeah. Actually, it is not going to happen anytime, because the programming has to be done by the students only. So they can get the things easier using the AI, but the ultimate design has to be done by the students only. So they have to learn the programs in intelligent manner, how to take over the AI. So, but AI will be the part of the life, we cannot avoid it, but we have to use the AI in a smarter manner. जैसे जैसे इंजीनियरिंग की चुनौतियां बदलती हैं, वैसे वैसे उन्हें समझने और हल करने के लिए सीखने का तरीका भी विकसित होता है, जिसमें सटीकता, अनुकूलन क्षमता और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। यहाँ मैकेनिकल सिस्टम से लेकर एडवांस एरोस्पेस तक हर क्षेत्र में महत्वाकांक्षा को अनुशासन और गहराई के साथ आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ इमेजिनेशन खत्म होती है वहीं से इंजीनियरिंग शुरू होती है, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग उसी इमेजिनेशन को स्काई हाई, स्काई के बियॉन्ड लेके जाती है। वांना नो हाउ? चलिए जानते हैं फिर। Mechanical engineering has always been the branch which converts ideas into reality. At the School of Mechanical Engineering, we have taken that further. We don't just offer aerospace, mechanical, or automotive, or advanced manufacturing to our students. Instead, our students carry out a real-time project in aerodynamics, propulsion, and structural design. We train the students to meet the industry. We don't just train the students to meet the industry needs. Instead, we train them to build it. Yeah. That is our motto. जहाँ इंजीनियरिंग और जीवन विज्ञान एक साथ आते हैं, वहाँ नवाचार अपने सबसे मानवीय उद्देश्य को प्राप्त करता है।
ये मिलन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और शोध को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी का गैप डिसअपीयर हो रहा है एंड इसी कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है बायो इंजीनियरिंग। टू फाइंड दैट आउट, लेट्स गेट इनटू द टिश्यू कल्चर लैब एंड सी हाउ इट्स हैपनिंग। Instrument room, right? Here we are running on particular experiment with an instrument that is called UV visible spectrophotometer, where we can measure the unknown concentration of any kind of protein sample or a DNA sample. So what we have to do, right? So this is based on Beer-Lambert's law, right? If you put sample inside this particular instrument, correct, then we'll pass the UV light through that solution. So based on the concentration of the sample, so UV light will be absorbed, and then it will be showing that it's a characteristic absorption spectra over here. As you can see, right, in that, right, we have placed our sample, and this is the absorbance value in the y-axis and the x-axis. What is the sample exactly of? That is a protein sample. Okay. We are measuring. So we have some unknown proteins. We want to identify the concentration of that protein in that particular solution. So before that, what we have done, we have made, prepared a calibration curve, right, using known, protein concentration. Then we are running that sample, right, unknown sample, right. Then we are getting the spectra for it. Then after getting the absorbance value, we will fit that absorbance value in that calibration curve, and then we will be getting the unknown concentration of that protein sample we are running. So this is 100% correct? Yeah, that is 100% correct. It will show this is UV spectrophotometry. We can get 100% definitely. आधुनिक प्रगति के केंद्र में कंप्यूटेशन है, जो शोध को गति देता है, विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ता है और नई खोज की प्रक्रिया को और तेज बनाता है। Ma'am, computing is not a discipline. It's a language which we are using in every discipline. Medical, finance, agriculture, governance, even all these sectors, they are using language. They runs on data, they runs on code, they runs on intelligence, which emerges from computing. So at SCOPE, we are training students who are writing language for next generation. So as you rightly said, those who are getting admission here, those who are interested in gaming, they are fascinated about the gaming. Yeah. They are already playing with a lot of games and they have that expectation. So whatever we teach here, we should teach them in that level. We cannot teach them with simple gaming development. That is what we are trying to do here. And for this, we need first of all, we need some infrastructure. A normal computer or a laptop cannot do that work because it involves a lot of computations. So it is basically image processing. The quality of image that you might have seen in the games is of a higher level, higher resolution images. So we have some specialized hardwares here. We have all the virtual reality based cameras, 3D cameras here. So that we use. And our curriculum also we decide in such a way that they match us with the industrial standards. So when we started this BTech in gaming technology, we have invited stalwarts from gaming industry. People have come from Bangalore, and they gave us the guideline about the curriculum, what are the softwares that we have to teach. So we have in our lab like softwares like Blender and Unity. Unity is a very basic gaming development tool. Anybody know that who are involved in gaming development, they know. So this is how we do it actually. शिक्षा में जवाबदेही और वास्तविक अर्थ यही है, जब सीखना प्रासंगिक हो, उसे व्यवहार में लागू किया जाए और वो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़े। यहाँ हासिल किया गया ज्ञान केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहता, ये आगे बढ़कर उद्योगों, शोध, नवाचार और सार्वजनिक प्रणालियों तक पहुँचता है, जहाँ ये वास्तविक दुनिया में बदलाव और प्रगति में योगदान देता है। वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी ने 2026 बैच में शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड बनाया है, जहां अंडर ग्रेजुएट का हाईएस्ट पैकेज 70 लाख पर एनम और पोस्ट ग्रेजुएट का 56 लाख पर एनम रहा। लगातार 4 वर्षों से 50 लाख पर एनम से ज्यादा के पैकेजेस और 7 वर्षों से माइक्रोसॉफ्ट प्लेसमेंट्स और 4 वर्षों से इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हासिल किए गए हैं। 2026 बैच में 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स
की प्लेसमेंट हुई है, जिनमें 1550 से ज्यादा इंटर्नशिप्स और फुल टाइम ऑफर्स शामिल हैं। हर साल 750 से ज्यादा कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट्स में भाग लेती हैं और अब तक 5500 से ज्यादा छात्रों को गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनीज में 7000 से ज्यादा ऑफर्स मिल चुके हैं। So we believe that internationalization is very important, and we also believe that the students' ambition should not be limited by their geography. So we through different MOUs with over 500 plus universities globally. वैश्विक अनुभव की तलाश करने वाले छात्रों के लिए जो संरचना और सहयोग के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, VIT भोपाल यूनिवर्सिटी दुनिया तक पहुंचने के लिए स्पष्ट और सुलभ मार्ग तैयार करती है, जिससे वो आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की ओर बढ़ सकें। नवाचार की शुरुआत विश्वास और सही मार्गदर्शन से होती है। इंक्यूबेशन सेंटर में विचारों को गंभीरता और अनुशासन के साथ विकसित किया जाता है और धीरे धीरे वो ऐसे उद्यमों में बदलते हैं जिनका वास्तविक दुनिया में उपयोग और महत्व होता है। सीखने से नेतृत्व तक, कक्षाओं से समुदायों तक, VIT भोपाल यूनिवर्सिटी देश की प्रगति में योगदान दे रही है। ऐसे व्यक्तियों को तैयार करके जो आलोचनात्मक रूप से सोच सकें, जिम्मेदारी के कार्य करें और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करें। यहाँ शिक्षा केवल एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता है जिसे हर दिन निभाया जाता है। विजनरी लीडरशिप, कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर रेडी academics और इनोवेशन ड्रिवन कल्चर के साथ VIT भोपाल यूनिवर्सिटी is actually shaping thinkers, innovators and game changers of New India. Well, what do you have to say about the university's vision? Let us know your views in the comments below.